या अभी धीरे धीरे कम हो रहा है। मैं इतना मतलब इतना ज़्यादा था मेरा नेट में चलती है। नेट में सही नहीं चल रहा था। धीरे चल रहा है क्या मेरा नेट पूरा? नहीं नहीं यार। ड्रेस करने हैं यहाँ से रखे डिस्प्ले आइकन्स में है। मतलब लोग तो है ही ना सिस्टम का कोई नेटवर्क थोड़ा सा तो हिला हुआ है, लेकिन मैं भी तुमको सही आ रहा होगा। अभी क्वालिटी सही होगा। दो सेकंड गाइस, मुझे अपना से तेज करना है। तो मेरे पास कोई मॉडल नहीं है तो मैं कुछ देख नहीं सकता, तो मैं तो भी कुछ कर नहीं सकता। तो सॉरी फॉर दैट अगर तुम लोग मेरे को देख रहे हो। मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ, मैं अपने इसी गेम प्ले को डुअल मोड में चला सकता हूँ मैं भी। तो मैं उसे ऑन कर दूँ क्या डुअल मोड के लिए? हम्म, तो मे भी वो सही रहेगा मेरे लिए। क्या बोलते हो तुम लोग? तुम लोग कोई दिक्कत हो जाएगा इससे? अरे यार मतलब कुछ होगा कुछ तो कुछ नहीं ऐसा कुछ मतलब मेरे लिए। बस हो यही कि मैं इसको अलग से वो करवा सकता हूँ। इस पे आता हूँ, मैं लाइव में आता हूँ, फिर इस पे आता हूँ, लाइव पे आता हूँ। मेरे को डुअल स्ट्रीम दो। नहीं नहीं नहीं, मेरे को ऑन नहीं करना स्ट्रीम की दुनिया में। मेरे को बस यहाँ डुअल स्ट्रीमिंग को ऑन कर देना था। जिससे होगा ये बस क्योंकि डुअल स्ट्रीमिंग मिल जाएगा हमें भी। क्वालिटी तुम लोग को सही आ रहा होगा तो हमने चलते वक्त बना लिए गेम प्ले से। भाई, तो मुझे पता नहीं है। ए, बिल्ली चेंज हो गया, अगला मेरे पास दूसरा बिल्ली था, ये दूसरा बिल्ली है। वाह, मुझे पता नहीं था। तो मुझे जाना है। तेरे बाद अभी खेलने का समय नहीं है, ज़्यादा बोले तो भगा देंगे। तो मेरे को जाना है। हाँ जाना मेरे को, दीवार के उस पार। Revelio. हाँ मैं वहाँ से आया था। ये खुलता है क्या? अच्छा मैं हर दरवाजा खोल जानता हूँ पहले से। अरे बुढ़िया पे क्या वो जान, अरे तो ये बुढ़िया जानता है, यही तो मैंने को कमरा दिखाई। हेलो। अरे अरे हाँ, कहाँ गई? दिक्कत हो गई क्या? मैं Revelio. परेशान कर रहा है। जादूगर ऐसे थोड़ी बनाऊँ, बोलिए कौन परेशान कर रहा है? बस सामने वाला तो हैंडसम हो तो कोई दिक्कत हो जाएगा ऐसे में। अरे तो कोई
ये भाई कहते हैं प्यारा कर, जैसे मैं यहाँ जा सकता हूँ लेवल लॉक, जैसे मैं लेवल भी लग जिसको वो क्या सर इससे मैं इंटरेक्ट कर सकता हूँ प्यारा है। लेकिन मेरा कोई और उधर जाना है। Revelio. Hey, the party be the party तुम्हारे पास हल्का मैं भी नहीं हूँ, इसे जादू की क्लास में हूँ। कहाँ है मैडम माँ? डरावना कलेक्ट द पार्सल फिगर्स ओके। एक्सप्लोरर एक्सप्लोर एडवेंचर से आगे सही नहीं मिला मेरे को। मैं हॉल के लाए खोपचे खोपचे इस जगह से मैं टेलीपोर्ट हो सकता हूँ। ऐसे मैं भी यहाँ से टेलीपोर्ट होता That हूँ। reminds me. Did Scribner say we could borrow the book overnight? Or that we'd get detention if we had it out overnight? I heard that कहाँ Professor जा रही Binns हो? died one night and showed up to class the next morning as if nothing had happened. I don't think he even knows he's a ghost. My family loves going to the Quidditch World Cup. Father was on the Barnton amateur team for a bit. Been obsessed with the sport ever since. कहाँ प्रॉब्लम है सज्जन को My भाई? little sisters will be so happy to see me over the holidays. सज्जन सही नहीं आ रही। tried to cast spells at me before we went. लेवल लॉक, जैसे मैं यहाँ पे लेवल है क्या, मतलब जैसे जैसे मैं पुराना होता जाऊंगा वैसे वैसे मैं हर जगह जा सकता हूँ। हेलो भाई लोग, कैसा है? एक नंबर। बंदर के हाथ में लंगूर वाला फीलिंग आ रहा है। तुम पे मोना सुन तो भालो एक तो इसको एगो हमको ये देखने दो कि मैं अपना एफपीएस में फ्लक्चुएट नहीं कर रहा तुम लोगों के लिए। चल क्यों नहीं रहा, चालू क्यों नहीं हो रहा? चालू हो गया। एफपीएस समय ठीक दिखा रहा है, एफपीएस में ज्यादा आ रहा है। नहीं नहीं सही है। मैं जा नहीं सकता क्या उस पर तैरने का मिशन ने कोई तोड़ दी, अब मैं कांड नहीं किया इस वक्त तू वैसे कांड वांड अभी एडमिशन लिया और नया कांड शुरू कर दिया। मैं अगर इसको जला सकते थे। मैं हूँ ही नहीं इधर, मैं जानता ही नहीं हूँ इधर किसी को भी। अच्छा इस गेट के अंदर जाना है मेरे को, रोटवे से एकदम दुम दुम करते हुए जाएंगे। ओए बाबू मसाए आमा के जाना तो कहते हो क्या पढ़ रहा है जादू की किताब, कितना पढ़ता लिखता है। Revelio. जादू कुछ हुआ ही नहीं तेरे को, बस कोई काम का नहीं तो देखो तो इसको पूरी भाई इसकी ना और दरवाजे मैं तो भूल जाऊंगा इधर तो सब चीज को देखते देखते। क्या ढूंढ रहा है ये कबूर, क्या ढूंढ रहा है भाई? वह कल्लू का लिया कहाँ ढूंढे तो भालिया। रूम लॉक, आदमी लोग जो परेशान। हे मैम इन हेल्प यू वन, नहीं जानता रहने दो। हर किसी को बोलना और हर किसी के साथ बोलना अच्छा नहीं Bravery रहेगा। runs in my family. I've never even cried. तो अच्छा ही वैसे मेरे पास है नहीं हाँ दोबारा इंडेक्स करने देता, ये खुल गया था अभी। What is the portrait doing? भाई ये क्या? Oh, watch the tile under your feet. You'll set off something foul. Oh, please be careful. ओके ये The है कैसे? unfairness of being hung here. Why it warrants. वो पार्ट मशीन क्या था वो? लॉक ओके, कहाँ जा रहे हैं मैडम देखो तो तुमको।
तो धड़ल्ले से यूटर्न मार दी, इसका बात है। तो तुम भी धड़ल्ले से यूटर्न मारेगा का? सब धड़ल्ले से यूटर्न क्या मार रहा है ये? लॉजिकल अच्छा काम कर रहा है यहाँ। ये देख मेरे पास किताब है, ले चल आज तुम लोग साथ जुड़ जाता हूँ। आजा ओए ये देख लाइन आ गया। मैजिक ये लैग करता है। कहीं तो लेके जा रहा है मेरे को ये। अपने आप में कहाँ लेके जा रहा है? Vivify! Oh yeah! Is that all you've got? Yeah. Man! Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Okay. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Levioso! Now, let's try something a little larger. क्या मतलब मैं फेस ले रही थी, हल्के में ले रही है भाई? इसको पता नहीं है क्या कि मैं मतलब धमाकेदार आदमी है? Let us begin with a basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprise... Good! Now, the basic cast. Well done! Okay. Very good. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Levioso! This should be easy. Protego! Stupefy. Complicates things. Lucky. Nothing lucky about it. Stupefy. Good form. I know. This
can't be your first duel. Let's just... All my students for this adept. Protego! Stupefy! I do enjoy life. Levioso! Watch your opponent decide to attack or defend yourself. Stupefy! Use the basic cuts when your opponent's guard is down. Not bad for a beginner. You give as good as you get. बिगेनर तेरी वजह से एक बार अटैक ना लगा इसको, हल्के में ले रहा है मेरे को। I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Gryffindor. Thank you, Professor Heckard. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right. That's enough spectacle for one day. Class is dismissed. ना मे बी गाइस मेरा स्ट्रीम थोड़ा सा परफेक्ट हुआ होगा, ठीक है, हल्का सा, क्योंकि तुम लोग थोड़ा सा दिक्कत दिया था ये बीच में, थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लमेटिक सब चीज़ हो गया था, तो उसको कुछ मैं फिक्स करने के लिए आया था, तो मे बी मेरे को थोड़ा स्क्रीन छोड़ना पड़ गया था, कोई ना, लेकिन अब मेरा स्क्रीन फिक्स हो चुका है, मेरा यहाँ पर सही जा रहा सब चीज़, और मैंने अपने हाथ से बना लिया, तो थोड़ा सा इसे कम होने में टाइम में भी लग सकता है। तो अभी धीरे स्टेबल हो रहा है मेरा ये पूरा का पूरा स्ट्रीम, नहीं स्ट्रीम स्टेबल होने का वेट कर रहा हूँ मैं, स्ट्रीम स्टेबल हो नहीं पा रहा है मेरा, पता नहीं क्यों। स्ट्रीम मतलब नेट का फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा दे रहा है ये मेरा इंटरनेट भी, तो अभी तो सिखा के गई है मोटी, अभी कहाँ तो आ रही है, अभी हमने नेट का फ्लक्चुएशन देख रहे थोड़ा सा, मैं स्ट्रीम थोड़ा परफेक्ट हो नहीं पा रहा है जैसा मैं चाह रहा हूँ, हाँ नहीं हो क्या गया है, मतलब से कुछ नहीं चाहिए था। अच्छा यहाँ देखो तो मेरे सही हो गया। दिक्कत क्यों दे रहा है बार मेरे को, मुझे समझ में आ नहीं रहा है मेरे को, ये वैसे तो बहुत ज़्यादा डिले कर दे रहा है मेरा ये ऑटोमेटिकली। मैं चाहता नहीं हूँ कि मैं कोई भी चीज़ में लोकेशन छूटे, तो मैं इसलिए मैं कर नहीं रहा था। Huh. Always thought Levioso was for first years. Not anymore. Okay. Oh, I'm not much for dueling. I prefer to keep things friendly. Okay. Levioso! मैं इसको कंट्रोल कर पाया। मैं कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, कोई ना। Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. नहीं, ये मेरा पहला डुअल नहीं था, ये तो मैं तो बचपन से करते आ रहा हूँ ना।
कुछ तो प्रॉब्लम दे रहा है ये 2-3 महीने में, मतलब डिफिकल्टी बहुत ज्यादा गिरा रही है। I never use wand in a combat. I had to share the wand. I never In use. fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Be coy if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. तेरी भाई ऐसा काय बोल रहा है मेरे को? Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance, if you're interested. Till next time. मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया। ये कंप्लीट नहीं आ रहा, तो गुस्सा लग रहा है थोड़ा सा ये। ऐसे में कितना देर खेलेंगे मतलब? ऐसे तो गेम ही ना खेलो। मानता हूँ मैं कोई देख नहीं रहा, नहीं मैं किसी को बोल रहा हूँ देखने। क्योंकि मैं देखो तो लेवियोसा मैंने देखा। You dueled Sebastian. He's strong competition. Well done. Thank you, thank you. Oh goodness, you need to practice a bit more, I think. Okay. Hey, no. I'd hate to face If you know the right spells, it's dark wizards that'll fear you, not the other way around. भाई कपल लवली कपल है यही है क्या? मैं तो आगे देखा हम कहीं का ना यार, तोहर लग के शकल एक जैसा लगे थे है ना, तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए कभी कभार। भाई अखिया हम आके देख के डरती है, हमें कहीं डरती है, वो हमें तो नहीं था। किसके ऊपर जाना है? भाई नीचे घूम जाते हैं। भाई क्या लग रहा है देखने में? भाई देख लिया, ये देखो आ गया। ग्राफिक्स है हेलो का पटाखा और लोग का इमेज बैठ सकते क्या यहाँ पर भी? तो लड़का निकली, तुम तो सावला निकली और मैं काला। और इसे घुमाओ, फिर घुमाओ, फिर घुमाओ, फिर। अरे मैं हो ही नहीं तो वो कौन बार घुमा दे? देखो तो क्या ही दोनों रास्ते एक ही जगह निकलता है। बैक में हो रहा है ये, मैं कहीं जरूर से बहुत ज़्यादा गिर जा रहा। अंदर का मेरे को लैग महसूस हो रहा है गेम में।
तो अनलॉक कर लिया। लेवल अनलॉक करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें रेट फिशिंग होने का। रेट फिशिंग हो तो सब तो मैं नॉर्मल है। मैं फ्रेम रेजर ऑन करना नहीं चाहता हूँ। नहीं, मेरे को फ्रेम रेजर नहीं चाहिए। मैं फ्रेम रेजर चाहता ही नहीं हूँ ना। मैं रॉ एफपीएस करना चाहता हूँ। अच्छा, मेरे को इसके ऊपर जाना है, मैं यहाँ जा सकता हूँ। हो इसके अंदर है क्या महाराज? नहीं गया था कम इसके अंदर। वो है क्या अंदर से? दवाई खोलो। ये तो खुला। पानी तो आ रहा है इस पे। इसको भी आ रहा है। ये क्या है? Levioso! ठीक है। Lumos. Revelio. चलो जाओ। वाह, तो भूल भुलैया है पूरा भाई कॉलेज। कुछ ज्यादा ही छोटा कॉलेज नाम लिखा लिया हूँ। प्रोफेसर फ्लाई, द फ्लाई ओवर मास्टर। बस यही काम बच गया था मेरा। if he has anyone schedule to version it is equal to dung dang ding ding dung dung। चीन दिमाग डिंग डिंग। ये मैं थक चुका हूँ यार ऐसे चल चल के। मैं नहीं चाहता हूँ कि मतलब मैं फ्रेम व्रेम कुछ खराब व्राब हो, लेकिन मैं क्या ही करूँ। ऐसे ज्यादा देर खेल भी नहीं सकता हूँ। ले, मैंने नेट ही चलना बंद कर दिया। अब ऐसे लगे तो मैं नेट ही नहीं चलता। क्या चाहता है कि मैं ऑनलाइन बंद कर दूं? ये तो ऐसे कैसे ऑन कर सकता हूँ?
ये चीज मैं समझ नहीं पा रहा हूँ अभी के लिए। मैं यहाँ पे इसको रख दूँ। इंटरनेट का स्पीड बहुत खराब आ रहा है। नेट का स्पीड आ ही नहीं रहा है सिंपल टर्म्स के बाद हम बात बोले तो। मैं क्या ही करूँ, मैं समझ नहीं आ रहा। रात रात मैं बस यही देखने में लग जाता हूँ, इवन मैं नेट नहीं आ रहा होता है। लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरा ट्राई कर रहा हूँ वैसे मैं अच्छा से अच्छा क्वालिटी भी डाल सकूँ। लाइव नेट ही बंद कर दिया अचानक से मैं पूरा। चल रुक गया तो मेरे को बस ये करने दो जिससे तुम्हें भी दिक्कत हो तो हल्का सा। हाँ तो अब यहाँ देखो, उसके बाद फिर मैं वहाँ देख सकता हूँ, वरना फिर सब पे बोर हो जाएगा ऐसे करके तो तुमको देख ही नहीं पा रहा। क्या नेट का स्पीड आ रहा है मेरा, मतलब इससे अच्छा तो मतलब दो ही नहीं, 2 से 30 के भी 440 के भी का स्पीड आ रहा है अपलोडिंग का। बस यही तो उम्मीद है मेरे को, 5G में इससे का स्पीड आता है। यही तो बात है जो मेरे को समझ में नहीं आता। मैं थक जाऊंगा ऐसे करते करते। देखो तो, सॉरी गाइस अगर मैं यहाँ पे कोई भी आया होगा तो मैं तो देख नहीं भी रहा था। तो चलो अच्छी बात है कोई नहीं आया। क्वालिटी और नाइस अब नाउ अच्छा लग रहा है देखने में। ना क्वालिटी और चेक तो करो। वाह ये 1000 से कुछ तो रुक गया है। पिंग और इंटरनेट का स्पीड दोनों ही बकवास है। Levioso! अच्छा मैं बिना फाइट का मैं जितना चाहे उसको उतना यूज कर सकता हूँ। Professor Ronan tends to go on a bit. I sometimes have to remind him to finish the I'm lesson. going to have my own. Some of us don't necessarily want him to get back to the lesson. आवाज गायब हो गया भाई, कुछ तो बात करे, समझ नहीं आ रहा। Levioso! Defense against the dark arts can be intimidating, but Professor Hecat actually makes it seem manageable. Madame Kagawa's getting a bit of an easy run of things, isn't she? What with Quidditch being cancelled. Sharp was in a mood the other day. Not a single student got their sleeping draft right, and he vanished the contents of every cauldron in the room with one cast. मतलब Have you finished your herbology essay? Mine's only about half an inch thick, and I found a black beetle on it. I don't mind herbology myself. I'll take a mandrake any day over an annoying little puffskein.
I think Garlic puts that venomous tentacula near us deliberately. She does. You see next time. You shouldn't get so upset in herbology. The rate you're going, you'll need a calming draft. Last time I saw your dragonhide gloves was at the vegetable patch in the greenhouse. Perhaps Garlic picked them up. ऑन करते हैं। हाँ मैं प्रेमिस का गिर रहा था, Here. तेज में हो गया। Behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? Hmm? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Nope. Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Okay. Akio. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Okay. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? So why don't we have our newest student start us off? मैं क्या करूं इसको ऐसे तानू बैठ जाएगा. Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Now, think of this like gobstones, if you will. But instead of throwing the marbles out, Accio. summoning them toward. Excellent control. Not to worry. अच्छा. That's it. Don't lose your composure. Very good. Stay focused. Very good. Points to Gryffindor. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition.
Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. You'll be the blues just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Be sharp. Accio! Splendid! Here we go! तेरी भैंस की आँख। That is how it's done. हल्के में ले रही है हमको। Quite impressive. Let us see this. क्या सीधी यहीं पे देख देंगे। इसकी भैंस की आँख। There we go. गेम Accio! नहीं 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 नहीं। Not to worry. इस समय काउंटर विनर यार। आखिरी में रुक गया था। Let us make this a bit more interesting, shall we? I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Be sharp. I know everyone is watching, but try not to be nervous. You are doing quite well. Accio! Excellent control there. Here we go. That is how it's done. Brilliant. हल्के में ले रही है। Let us see this. तेरी भैंस की आँख। There we go. Accio! Not exactly your typical lesson, is it? Not that I know. Happens to the best of us. समय को हर जगह गुस्सा तो हो जाता है वो। Very good, both of you. Well done. यार मेरे को लगा था थोड़ा बुरा 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 हल्का हल्का बुरा बुरा। Class is dismissed. Gather your things on the way out. Well done back there. You took the loss in stride. Didn't want to go too easy on you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. I'm glad you understand. I'm holding my own. Thank you, but I've been holding my own. I appreciate your confidence.
I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Is Wagadu much bigger than Hogwarts? Wagadu School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Wagadu uses one. That's incredible. Spells cast without a wand must be less powerful than those cast with a wand. No, not at all. Wizarding magic cast without a wand is just as powerful. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. Is Wagadu a castle like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Wagadu, but I am glad to be here at Hogwarts. I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Of course, you can use Accio on humans, if you're so inclined. Well, you'd be using it on clothing, to be precise, Sebastian. You know it won't work on humans. A word, if you would. After my brother learned the summoning charm, it was constant Accio this, Accio that, cutlery flying everywhere. Quite unsafe, really. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? Miss Onai is a talented witch. Take it in stride. One often gains the most from the battles one has lost. Of course, Professor. It was a challenging match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. अब ना मैं चल सकता हूँ. Revelio. Professor Ronan reminds me of my grandfather. Loads of wisdom, but a bit mad. Oh, Banshee. Hello there. You're the new student, aren't you? Yep. I guess I am.
Hello, you wanted to speak to me? Samantha Dale. I've been eager to meet you. You're the student everyone's been whispering about. Hope your first day's going well. You certainly seem to hold your own in charms. I just is kind to you say that is challenging a lesson. Thank you, but it really wasn't all that challenging. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be a bit overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I find Professor Ronan's lessons a bit more challenging than you do. फिल्म बहुत सारा टॉप हुआ है। लेवल 73,057 ड्रॉप हुआ है मेरा। अब मेरे को समझ में नहीं आया ये रिकवर तो नहीं हो पाएगा मे भी ना। और रहता है तो मेरा फ्रेंड्स बढ़ते जाता है ड्रॉप होना। मैं क्या करूं इसका इंटरनेट के लिए। प्रॉब्लम तो होना तो नहीं चाहिए था, ये तब भी हो रहा है। लगता है आज सुबह से नेट का स्पीड 0 तक पहुंचा देता है मेरा। ऐसे रखते हैं चलने लगता है, लेकिन ऐसे में चलाना ही नहीं चाहता हूँ। ऐसे रख लेता मैं इसको डायरेक्ट। हो क्या रहा है हाँ यार, आज के इतना